Assalamu alaikum. Welcome back to Seco's lecture on chemistry. The topic that we're going to be starting today is chemical equilibrium. इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस को, डायनामिक इक्विलिब्रियम को, एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड देयर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स. उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ले शैटलेयर्स प्रिंसिपल. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में बात करने से. एक रिएक्शन जो होता है उसके अंदर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं एंड दे फॉर्म सम प्रोडक्ट्स. इसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं क्योंकि ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनते हैं. देयर आर सम रिएक्शन फॉर एग्जांपल हेबर प्रोसेस जिसके अंदर प्रोडक्ट्स रिएक्ट अगेन टू फॉर्म द रिएक्टेंट्स. इसको हम बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं. नाउ रिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहां products can react to form the original reactants, and this is the sign that we use for reversible reactions. For example, hydrous copper sulfate to anhydrous copper sulfate is a reversible reaction. CuSO4 plus अब ये सिंबल हमें ये बताता है कि ये रिएक्शन बोथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन में जाता है. हेंस दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन. अब रिवर्सिबल रिएक्शंस हमने एस्टैब्लिश कर लिया तो हम इक्विलिब्रियम की बात करें. इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है. जब हम इक्विलिब्रियम की टाइप्स डिस्कस करते हैं वी हैव अ वेरी स्पेसिफिक टाइप कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम. डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये है जिसमें जो डायनामिक है, डायनामिक हमें बताता है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. इसका मतलब ये है कि वो फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है. अब डायनामिक इक्विलिब्रियम में द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is the same as the rate of backward reaction. लेकिन एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दिस इज ओनली ट्रू व्हेन द सिस्टम इज क्लोज्ड. क्लोज सिस्टम का मतलब ये है कि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्सेस या एक्सटर्नल फैक्टर्स उसको अफेक्ट नहीं कर रहे. सो दिस इज व्हाट इज नोन एज डायनामिक इक्विलिब्रियम. अब सिंस द हमने बात की कि इक्विलिब्रियम में कॉन्सेंट्रेशंस कांस्टेंट हो जाती हैं, सो इसको हम एक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. टाइम on the x-axis, and here we have the concentration in mole per centimeter, dm mole per dm cube. This is the forward reaction, और this is the backward reaction. आपने देखा कि the concentration after some while becomes constant, increase होता है concentration में, and until the equilibrium is
established ये जो concentrations हैं ये दोनों constant रहती हैं at some point, but this is only true in a closed system and never in an open system. Now, there are some factors that affect the position of equilibrium. वो ऐसे factors हैं जिनको अगर आप change करेंगे तो the position of equilibrium can shift. अब position of equilibrium से मतलब क्या है? दो तरह की position होती है, left और right. Right side is for products and the left side is for reactants. अगर position of equilibrium is shifted towards the left, इसका मतलब ये है कि concentration of reactants increases. अब देखें ना, for example, अब इसकी पोजीशन अगर इस तरफ शिफ्ट होगी तो ऑब्वियसली इनकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी रिएक्टेंट्स की, और सिमिलरली अगर इसकी पोजीशन राइट की तरफ शिफ्ट होती है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स वुड इंक्रीज. कॉन्सेंट्रेशन से हमारा इधर मतलब है द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स that would increase if we shift the position of the equilibrium. Now there is a principle that says, that is called Le Chatelier's principle, और वो ये शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम को कनेक्ट करता है डायनामिक इक्विलिब्रियम से. और ले शैटलेस प्रिंसिपल ये कहता है कि if a change is made to a system, if a shift or a change is made to a system at dynamic equilibrium, the position of equilibrium moves to minimize the change. इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये कि अगर आप पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को किसी सर्टेन डायरेक्शन में मूव करेंगे तो जो पोजीशन है इक्विलिब्रियम की वो उस चेंज को अपोज करेगी उसको मिनिमाइज करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, there are three factors that can affect the position of equilibrium. They are pressure, concentration, actually four factors: pressure, concentration, temperature, and catalyst. Now हम ये देखेंगे कि how these four affect the equilibrium, the shift of the equilibrium. अगर आप concentration increase करते हैं, the equilibrium of the reactants, the equilibrium shifts to the right to reduce the effect of increase the concentration of reactants. मैं ये कह रहा हूँ Na plus Cl, ठीक है, NaCl. If you increase the concentration of the reactants, the position of equilibrium shift to the right. जब वो right की तरफ shift होगी तो it opposes the change that was made. Change क्या made हुआ था जी? इनकी concentration increase हुई थी. और जब ये right की तरफ shift होगा तो इनकी concentration reduce हो जाएगी because more product is made. This is how Le Chatelier's principle explains the shifting of the equilibrium when it is in dynamic equilibrium. Similarly, इधर अगर आप
कॉन्सेंट्रेशन की डिक्रीज करेंगे तो more product would be made, less product would be made and the reactant shifts towards the left side. Now अगर हम प्रेशर की बात करें, इंक्रीज इन प्रेशर दो चीजों को कंसंट्रेशन और प्रेशर जो होते हैं सिमिलर होते हैं. Concentration is for liquids whereas the pressure is for gases. When you increase the pressure, the equilibrium shifts in the direction that produces smaller number of moles of gas to decrease the pressure gain. Increase pressure, equilibrium shifts in the direction with smaller moles. अब ये ऐसा होता क्यों है? ये ऐसा होता इसलिए है क्योंकि when it moves in the direction with less moles तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा. और जब वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा तो मोल्स जो रिएक्टेंट्स के हैं वो रिड्यूस होंगे. वो जब मोल्स रिड्यूस होंगे तो प्रेशर वुड ऑटोमेटिकली डिक्रीज, हेंस अपोजिंग द चेंज दैट वाज मेड. इसी तरह हम टेम्परेचर और कैटलिस्ट को भी इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है दैट चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन. they increase the rate of forward reaction and reverse reaction equally. अब catalyst can cause a reaction to reach equilibrium faster. So catalyst का position of equilibrium पे कोई change नहीं होता once the equilibrium is changed, but obviously rate पर catalyst का effect होता है. And we're going to see that in the next topic when we discuss exo and endothermic.